big welcome from the VSAT team. VSAT Virtual Education Smart Aptitude Training. VSAT is India's dedicated online learning platform focused on empowering aspirants preparing for school and college level teaching. वीसैट के लिए आपको क्यों ज्वाइन करना है वीसैट? सो अभी हमारी फ्री डेमो क्लास है. आगे we'll be starting with a mock test series which will be specifically focused on exam level preparation. So आप लोग की एग्जाम लेवल प्रेपरेशन कैसी रहती है उसके लिए हम शुरू करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज 20 दिसंबर ऑनवर्ड्स. अभी हम अगर आपका ये सवाल है कि हमको वीसैट क्यों ज्वाइन करना है, सो एग्जाम ओरिएंटेड हमारी टीचिंग अप्रोच है. पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा आपको मेंटोर्स के साथ. आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज करेंगे. और जैसे हमने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी. We'll be preparing smart study plans. So that's why we actually request you to join VSAT कि आप अपनी यात्रा जो टीचर बनने की है वो VSAT के साथ शुरू करें. हमारी इंग्लिश डेमो क्लास का सेशन will be led by our experienced distinguished faculty रतन सर. वेलकम एस्पायरेंट्स, आप सबका स्वागत है VSAT के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे. As a teacher, as you all aspire to become a teacher, all of us are aware. You too must be aware that the role of teacher is not just limited to the four walls of the classroom. The teacher has also to inspire the students to learn their own and develop that, knowledge set of knowledge. So, as a teacher that I have been teaching for the last 15 years. What I have experienced is that becoming a teacher is not that easy as we often assume. A teacher is, very responsible job. Teaching is a very responsible job. And what all we have to keep in mind is knowing when it comes to cracking PRT or TGT or PGT, you should always keep in mind that knowledge, accumulating knowledge, collecting data is not enough. Knowing is not enough. Knowing what we know is very important. So for cracking any competitive examination, an aspirant should be very well aware of what he knows and what he should know and what he should not. What he should skip. So आपको भी इस बात को ध्यान में रखना है कि सिर्फ पढ़ना, lot many books, volumes of text you read, and that doesn't always help you out. So you have to be very careful, very judicious in the selection of what you read. Very is qualifying the term neatly and neatly qualifies the term rights. So दोनों के दोनों adverb के तौर पे आप यूज करें. ठीक उसके नीचे एक क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन पे आप आ जाओ. What is the meaning of to hit the nail on the head? So he has hit the nail on the head. By doing so or by responding in this way, he has hit the nail on the head. That is, he did exactly what was demanded by the circumstances, what was demanded by the situation. Do precisely what is needed. That is the meaning of. That's an idiomatic expression. तो ये उसका meaning बना. तो आंसर कौन सा करोगे? To do something perfectly. Doing something perfectly, that is precisely and perfectly doing something what is needed. तो वो चीज आपने इसका होगा. ये idiomatic expressions, क्वेश्चंस idiomatic expression से और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी अनन्या ऐसे पूछे जाते हैं. आप क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो जब हम लर्न करते हैं वर्ड्स को, वोकैब बिल्डिंग जो हम करेंगे, तो उस दरमियान हमें idiomatic expression and one word substitution का भी खास ध्यान रखना होगा. Right now, synonyms and antonyms हम learn करेंगे. So we will be running a vocab session, very interesting, very engaging session. हम story के through पढ़ते हैं. मैं आपको पढ़ाऊंगा. तो I will form a small story from the real life, anecdotes हम लोग लेते हैं ज़्यादातर, या कहीं से we select 4, 5 या 6, 7 words and we create our
own story. We create story using those words, and this is how I teach vocabulary. So that way, if you learn that way now, because I mean words, our focus is on the application of the words. We don't encourage the students to mug up. Oh, stop mugging up. I never encourage students to mug up things, you know. तो आप मग अप मत करें, आप स्टोरी के थ्रू, आप अप्लाइड वे में आप पढ़ेंगे ना वो कैब को, तो वो आपको सीधा सीधा याद रहेगा और आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे ठीक से। फाइन। अच्छा, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने इसमें यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे इसके ये एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इसको भी हम अटेम्प्ट करते हैं। इफेक्टिव टीचर्स ऑलवेज ब्लैंक देयर इंस्ट्रक्शंस clearly so that all learners can follow. So what an effective teacher does, if an effective teacher communicate his instruction के साथ we cannot use the confuse or mumble or ignore, so बहुत आसान सा आंसर है communicate। नीचे जो उसके पैसेज है ना, that's really very interesting, very good, बहुत छोटा सा है, 4 सेंटेंस का है। एक बार मैं इसको रीड आउट करता हूँ। टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग learners curiosity and confidence. Raju, you should keep in mind the keywords only. Shaping learners curiosity and confidence. Teacher's role is being discussed in the very first line, that is, you know, shape karna kisko, students ke, learners ke andar curiosity ko and confidence ko shape karna, that is the role of a teacher. Acha, ab classroom mein what happens if the classroom is safe, if inclusive environment is not exclusive, it is when it's inclusive, it's a safe and engaging, then what happens, the outcome is participation is active. Students participation in the classroom is active if the classroom atmosphere is safe, it's inclusive and it's engaging. The students participate actively and they themselves take the responsibility for their own learning. They learn on their own. When the student's mind is active, when a student is participating in the process of learning actively, he will learn on his own without the help of much help from the teacher. So this is what the passage reads. अब second line, third line जो है, आखिरी जो है बच्चे, clear feedback from the teacher helps learners understand their strengths and improve in areas where they lack, I mean where they struggle. So clear feedback. The passage talks of only 3 things, you know, the role of the teacher in the very first line, second one, the atmosphere inside the classroom, and the feedback, impact of feedback. When the feedback given by teacher is clear, it's honest, students understands, knows his own strength and weaknesses, and accordingly he works to improve on the weak links, जो उसका weak areas हैं, weak links हैं, उस पे काम करें। अच्छा, अब इसके बाद जो questions है ना बच्चे, very easy, very simple, very direct questions। जैसे देखो पहला वाला में देखो, what happens when classroom are safe and inclusive and engaging, students participation is active, हो गया, 1 मिनट में आंसर आपने निकाल दिया ऑप्शन नंबर बी। take responsibility for their own learning, that is what students know that they have to learn their own on their own, वो अपने आप लर्न शुरू करेंगे, तो depend only on the teacher नहीं, become active participants in the learning process, become active participants, option number C is the correct answer। अब आप आ जाओ लास्ट वाला में, clear feedback from the teacher means what, mainly helps in what, अबे understanding the strengths and weaknesses of the student, and if once you understand your strength and weakness, you improve your weak areas। So कितना आसान है, बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब लिटरल लेवल ऑफ मीनिंग पे पैसेज है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत आसान है और हम लोग इसको करेंगे बहुत बढ़िया से। ठीक है बच्चे, मैं यही चीज आपको थोड़ा सा, आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, यहाँ पे क्या क्या है। अनन्या यू आर गेटिंग, बाकी कंठ, राजू एंड कोई और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी हमारे एस्पायरेंट्स ज्वाइन करा है जिन्होंने, एक क्वेश्चन 70 पे आप देखो, each of the students were given, that's wrong na, each refers to individual member within a group, so each, when we use the term each of the students now, we are referring to all the students individually in a group के अंदर, क्लास के, मान लीजिए क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को we are referring, तो each of the students means एक बार में एक स्टूडेंट, तो that becomes singular ना, प्रत्येक, हिंदी में क्या बोलोगे आप, प्रत्येक मन singular, single एकदम, एक इंडिविजुअल अटेंशन की हम बात करेंगे। सो ईच ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स was given,
तो मेरे ख्याल से आप समझ गए इस बात को। इस तरह से हम लोग करेंगे ग्रामर वाला पार्ट। इजी है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और कुछ जो स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं आप में से कुछ करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी नीचे है, अगर आप करंट अफेयर्स वाला में अगर करना चाहेंगे तो हम करंट अफेयर्स के कुछ हिस्से को देख लेंगे। करंट अफेयर्स इसमें शायद ऊपर ही रह गया मेरे ख्याल से, शुरू में ही रह गया था, या करंट अफेयर्स 40 के अराउंड है, क्वेश्चन नंबर 40 के अराउंड करंट अफेयर्स है। सो मैडम और कुछ बताएं, हम लोग इस पे डिस्कस, या करंट अफेयर्स पार्ट, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस। The president of India is elected by, we know electoral college होता है जिसमें MLAs और MPs होते हैं। तो कैसे हम हमारे हिंदुस्तान में कैसे हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। तो आंसर ऑप्शन डी, दैट्स इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ MLAs and MPs। And river Brahmaputra originates, everybody knows, in Tibet, and Tibet is now the part of the China. So answer is Tibet. Operation Blackboard was just started, to strengthen, improve the quality of education, primary education. तो प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ब्लैक बोर्ड को इन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करा था। क्वेश्चन नंबर 44 पे कोई ले आया, व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल में क्या आएगा, कोल आएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट आएगा, नेचुरल गैस आएगा। तो आंसर इज कोल। इस तरह से बच्चे। और लैंड ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ राइजिंग सन। लैंड ऑफ राइजिंग सन तो जापान को कहते हैं, लेकिन जापान इसमें ओके, स्टेट के लिए पूछा गया, विच इंडियन स्टेट। और ऐसे तो दुनिया में अगर आप लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलोगे तो दैट इज द आंसर इन जापान, कंट्री के तौर पे। लेकिन यहाँ पे हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश में है ना, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज उगता है। तो इंडिया के लिए अगर हम जो इंडियन स्टेट की अगर हम बात करेंगे और लैंड ऑफ राइजिंग सन की बात करेंगे, करेक्ट आंसर वुड बी अरुणाचल प्रदेश। अदरवाइज लैंड ऑफ राइजिंग सन के तौर पे जो कंट्री जाना जाता है, दैट कंट्री इज जापान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, दैट इज RTE फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 14। ये आपने जाना होगा। ये इट वाज डन थ्रू 86th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें आर्टिकल 21A इज द करेक्ट आंसर। So Article 21A deals with RTE, right to education। 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा करा गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई थी। बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल मैन, एवरीबॉडी नोज, डॉक्टर APJ कलाम साहब। और द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे दैट रन्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एंड दैट उसका लेंथ मेरे ख्याल से 4112 किलोमीटर। यस, 4112 किलोमीटर। Yeah, that is NH44, and NH27 it runs it starts from Porbandar and Silchar, Assam Silchar में जाती है, that is second longest national highway, NH27, and NH44 is the longest national highway from Kashmir to Kanyakumari, measuring 4112 kilometers। तो हो गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट डॉक्टर मैम थी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, या प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, वो थी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंदिरा जी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गंगा ऑफ द साउथ इज कॉल्ड कावेरी, कावेरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा, आपने नाम सुना होगा, दक्षिण गंगा, दैट्स कावेरी। खत्म हो गया ये क्वेश्चंस भी सारे। जी सर, थैंक यू सो मच।